हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये डीसी मोटर का टॉपिक है। मैंने लास्ट आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया था, तो आज मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। 101 से स्टार्ट करती हूँ। चलिए, आपका 101 कह रहा है द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर इज आल्सो नोन एज, रोटेटिंग पार्ट इज आल्सो नोन एज आर्मेचर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? A DC shunt motor is required to drive a constant power load at rated speed while drawing rated armature current, neglecting saturating and all machine losses. If both the terminal and field current of machine are halved, then a speed remains at 1 per unit, but armature current becomes 2 per unit. Next. In case the condition for maximum power for a DC motor are established, maximum power established, efficiency of motor will be less than 50%. In a DC shunt motor, under the condition of maximum power, current in armature will be more than full load current. DC shunt motor में maximum power के condition में करंट इन आर्मेचर विल बी मोर देन फुल लोड करंट होता है। नेक्स्ट, डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट suited फॉर रिएक्शन वर्क बिकॉज टॉर्क इज proportional to a square of armature current and a speed is inversely proportional to a square root of torque. Next, in which of the following cases is frequent starting and stopping of electric motor needed? Frequent starting and stopping, lift and hosts. Next, an electric motor with constant output power have a torque speed characteristics in form of an electric motor with constant output power have torque speed characteristics in form of rectangular hyperbola. नेक्स्ट, ये तो न्यूमेरिकल है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं। A DC motor should not be started without a starter because of high speed motor. ये होना चाहिए 9 का C। अच्छा, because of very low resistance of armature winding. Because of very low resistance, DC motor should not be started without a starter because of very low resistance of armature winding. Next, which of the following braking method save energy? Regenerating braking save energy. Next देखते हैं। A DC shunt motor is driving a constant torque load on inserting an additional resistance in armature circuit. The speed of motor will decrease. Which is correct statement? In a DC commutator motor, the rotor has permanent magnet. In a brushless DC motor, the rotor has permanent magnet. In a hybrid stepper motor, a starter has permanent magnet. Multi-stack variable reluctance motor has permanent magnet on rotor. Which is correct statement? In a brushless DC motor, rotor has permanent magnet. Next, back EMF of DC motor depends on depends on P phi n by 60A होता तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, स्पीड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, armature shunting method of a speed control of DC shunt motor is preferred over armature resistance method due to armature shunting method of a speed control of DC motor is preferred over armature resistance method due to better speed regulation. ठीक है, नेक्स्ट, windage loss are caused by air friction. Hopkins test is used to find out the efficiency of DC compound या shunt motor.
Next, it is advisable to start a DC series motor with some load to limit the speed. It is advisable to start DC series motor with some load to limit the speed. The speed control of DC shunt motor in both directions can be obtained by Ward-Leonard method. Next, the applied voltage on a motor is 200 volt and back EMF 160 है. Efficiency क्या हो जाएगा? Efficiency of motor हो जाएगा आपका पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट. आउटपुट बैक EMF इंटू करंट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 160 और पावर इनपुट V इंटू आई. आई ये कैंसिल हो गया ना, तो EB बाई V, तो सिंपल 160 बाई 200 80%. ठीक है. नेक्स्ट, the armature current of DC motor is maximum. Armature current of DC motor is maximum when motor has just started moving. Armature current of DC motor is maximum when motor has just started moving. The internal characteristics of DC shunt generator is a plot between internal characteristics of DC shunt generator is a plot between induced EMF and armature current. Internal characteristics of DC shunt motor, induced EMF and armature current. Next, if the value of resistance in an electric motor is kept constant, then the current required to start the motor will be initially it will be more and then decreases. When the speed of DC motor drops because of an increased load, there is also a drop in back EMF. Okay, which of the following, what does following picture depict? क्या है ये? Shunt field, speed regulation of DC motor by SCR, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर कंट्रोल. ये आर्मेचर में वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड किया गया है, ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड है. ठीक. नेक्स्ट, विच मेथड इज ऑप्टेड टू अचीव अ स्पीड कंट्रोल एबव रेटेड RPM ऑफ DC मोटर? स्पीड कंट्रोल एबव रेटेड RPM इसका हो जाएगा आपका वार्ड-लियोनार्ड होना चाहिए. ये फ्लश कंट्रोल, फील्ड फ्लश कंट्रोल मेथड. स्पीड कंट्रोल एवं रेटेड स्पीड, तो फ्लश कंट्रोल मेथड. ठीक है. नेक्स्ट, अ cumulatively compound DC motor runs at 1500 RPM on full load. If its series field is short circuited, its speed increases. नेक्स्ट है, field test is performed on which type of DC motor? Field test is performed on series motor. Field test series motor में होता है. Which of the following is the most efficient method for increasing the speed of 4 kilowatt DC shunt motor? Most efficient method of increasing the speed of 4 kilowatt DC shunt motor is flush control method. क्या कह रहा है? Flush control method is more suitable for 4 kilowatt DC shunt motor for increasing the speed. As we know, in proportion to 1/5, speed can be changed by changing flush of field system. It can be operated above base speed drive, which is called a constant power drive. Resistance in series with armature of DC shunt motor will reduce the speed. ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ऊपर में है तो स्पीड घटेगा ही. यहाँ से देख लीजिए. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DC सीरीज मोटर. DC सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क. फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कॉइल साइड आर. फुल पिच वाइंडिंग जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कॉइल साइड आर एग्जैक्टली इन फेज. During plugging, external resistance is also introduced into a circuit to limit the following.
During plugging, external resistance is also introduced into a circuit to limit the current. Dynamic braking can be used for which of the following? Dynamic braking is used for shunt, series and compound motor all. Next क्या है? The rated speed of given DC shunt motor is 1050. To run this machine at 1200, following the speed control scheme will be used. Field resistance control. To achieve a speed above rated speed, we need flush control method. Speed above rated speed के लिए flush control यूज होता है, ठीक है. नेक्स्ट है 2 DC series motor connected in series draw current I from supply and run at speed n. When same motor are connected in parallel taking current I from the supply, a speed of each motor का जब सीरीज में स्पीड n था, ठीक है, करंट I था, और पैरेलल में कनेक्ट हो तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो स्पीड घट जाएगा. इन प्रोपोर्शन टू EV/5, ठीक है. पहला EV1 EV2 EV2 फॉर वन मोटर EV/2 हो जाएगा N1I. EV प्रोपोर्शन टू N2 इंटू करंट हाफ हो रहा है, ठीक है, पैरेलल में I/2. फ्रॉम इक्वेशन 2N1 बराबर N1. एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो करंट घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा. कितना बढ़ेगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट द नो लोड स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर इज. नो लोड स्पीड इज वेरी हाई. नो लोड स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर वेरी हाई. DC series motor are connected in series to produce torque T. If motor are not connected in parallel, the torque produced will be. सीरीज में टॉर्क T है तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यहाँ ये T प्रोपोर्शनल टू 5I हो जाएगा, ठीक है, या 5I है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, सीरीज मोटर है तो IA स्क्वायर हो जाता है. सीरीज में करंट I रहेगा, पैरेलल में I/2 हो जाएगा, यानी I²/4 4 टाइम्स T/4 हो जाएगा. ये टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी T/4. सही है. नेक्स्ट विच मोटर हैज पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल? पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल सीरीज मोटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर ड्राइविंग क्रेन, हॉर्स एंड सीडर पंप एंड कन्वेयर बेल्ट ड्राइव के लिए? सीरीज मोटर ही तो होता है, हाँ, ठीक है. नेक्स्ट enclosure of motor is made from. Enclosure of motor is made from cast iron. Field control of DC shunt motor gives. Field control of DC shunt motor gives constant kilowatt drive. Flux is maximum in following part of DC motor. Flux is maximum under leading pole tips. The DC machine torque is proportional to DC machine torque is proportional to T proportional to phi IA प्लस और आर्मेचर करंट बोथ होता है. नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज आल्सो नोन एज. परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज आल्सो नोन एज सेपरेट एक्साइटेशन. मोटर दैट इज यूज्ड फॉर इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड इज cumulatively compound मोटर. मैच करना है यहाँ पे क्या है, ये DC सीरीज हाई स्टार्टिंग टॉर्क और शंट कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट द हाई स्पीड अटेनेबल बाय DC शंट मोटर इज. हाई स्पीड DC शंट मोटर इज इक्वल टू नो लोड स्पीड. नेक्स्ट if the field of DC shunt motor gets opened while motor is running, then motor will attain dangerously high speed. In Swinburne's test of DC machine, the shunt machine is run as motor at no load at rated speed and rated voltage. Next
द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर इज current flowing conductor of DC motor AC. As the load is increased, the speed of DC shunt motor. As the load is increased, the speed of DC shunt motor reduce slightly. नेक्स्ट है आपका the current in the armature of DC series motor is reduced to 50%. करंट 50% रिड्यूस हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, IA स्क्वायर होता है, 50% रिड्यूस हो रहा है तो टॉर्क हो जाएगा आपका 0.25 25% अपनी भैंस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग DC motor is the typical value of application mentioned: shunt, electric train, series machine tools, series wheel drive, compound flywheel drive. The following DC motor is the typical field application mentioned: compound motor, flywheel drive होता है, ठीक है। नेक्स्ट, how many watt second are supplied by motor developing 2 horsepower for 5 hours? 1 हॉर्स पावर 746 वाट, तो 2 हॉर्स पावर 746 इंटू 2 हो जाएगा, वाट आवर है ना, वाट सेकेंड है, 5 आवर को 5 सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.6856 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सप्लाई पोलैरिटी टू द आर्मेचर टर्मिनल ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिवर्स्ड, मोटर विल रन अंडर प्लगिंग कंडीशन. In a motor starter, the electromechanical contractor provides inherent protection against overvoltage. A speed torque characteristics of DC series motor operating from constant voltage supplying. A speed torque of DC series motor ये होता है। नेक्स्ट, ठीक है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर और इंडक्शन मोटर। अल्टरनेटर में वी कर्व होता है, अल्टरनेटर वी कर्व, इंडक्शन मोटर सर्किल डायग्राम, डीसी मोटर स्पीड टॉर्क, डीसी जनरेटर ओपन सर्किट, 4 3, ठीक है, ये दोनों होगा। और फिर इंडक्शन मोटर सर्किल डी का पहला हो जाएगा तो सी ऑप्शन होगा, यस सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग इज नॉट सुटेबल फॉर मोटर, मोटर के लिए सुटेबल नहीं है तो फ्रिक्शन ब्रेकिंग। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर ग्राफ ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज parabola up to full load and a straight line at overload, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which of the given losses are directly proportional to a square of a speed, both windage and ED current loss, directly proportional to a square of a speed, windage and ED current loss. Halation braking is used where load on motor has very high inertia. वेरी हाई इनर्शिया में कौन सा मोटर यूज होता है, ट्रेन में रिजनरेटिव ब्रेकिंग तो होता है, यस रिजनरेटिव ब्रेकिंग इज यूज्ड वेयर लोड ऑन मोटर हैज वेरी हाई इनर्शिया। नेक्स्ट, आर्मेचर करंट एट अ स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग, armature current at a starting can be reduced by keeping RA maximum, armature current maximum, field current maximum, I हो जाएगा V आर्मेचर करंट, I बराबर V बाई आर होता है आर्मेचर। तो जाहिर सी बात है कि आर्मेचर करंट है मैक्सिमम होने के लिए
आर्मेचर रेसिस्टेंस नहीं रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस होने के लिए आर्मेचर करंट मैक्सिमम होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए और RF मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ DC मोटर अंडर लीडिंग पोल टिप्स फ्लक्स डेंसिटी विल इंक्रीज, लीडिंग पोल टिप्स में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, हैवी ड्यूटी स्टील वर्क cranes having wide load variation are equipped with DC series motor. The speed of motor exceeds the synchronous speed. This braking method is called regenerative braking. Current drawn by 230 volt DC motor of armature resistance दिया है, बैक EMF दिया है, तो I बराबर हो जाएगा EB बराबर हो जाता है DC मोटर EB बराबर V प्लस EB बराबर V माइनस IAR से करंट निकल जाएगा, ये आ जाएगा 60। When a DC series motor is connected to AC supply, power factor will be low because of a high inductance of field and armature circuit. Next, the speed of DC shunt motor is required to be more full load speed. This is possible by क्या हो जाएगा, reducing the field current. This is possible by reducing the field current. Next, the torque developed in DC series motor in unsaturated magnetic circuit condition is directly proportional to a square of load current. Which of the following is a correct statement about series motor? Its field winding consists of thicker wire and less turn. What to do in a case a spark occurs on the carbon brushes? Clean the commutator. Spark occurs on the carbon brushes. Clean the commutator. Which of the following not run with the help of DC supply? A squirrel cage motor. DC series motor should be connected with load by means of a direct coupling drive. In 3-point starter, the overload release coil operate if line current increases beyond set limit. In 3-point starter, the overload release coil operates if line current increase beyond set limit. Next है, which motor is not started at no load? DC series motor. The armature current of 500 volt DC shunt motor is 20 ampere and armature resistance is 0.5 ohm. What will be the back EMF? Back EMF EB बराबर V माइनस IAR है, ये आ जाएगा 490। नेक्स्ट है, ये भी वही न्यूमेरिकली है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट, armature of DC motor is laminated to reduce ED current loss. How many number of terminal will be in terminal box of DC shunt compound motor? 6 terminal. Two shunt terminal, 2 series terminal and 2 armature terminal. ठीक है। नेक्स्ट, विच मोटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर कन्वेयर्स के लिए DC सीरीज मोटर होता है। द स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF. सीरीज मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF. नेक्स्ट, the speed of DC series motor is n proportional to EB by 5, तो proportional to armature नहीं, inversely proportional to armature current होगा. Next, in 3-point starter, no volt release coil operates if there is a break in field current. In 3-point starter, no volt release coil operates if there is break in field current. Types of DC motor used in electrical traction is DC series motor,
types of DC motor used in electrical traction is DC series motor. Next, 2-point starter is used for starting DC series motor. Which motor is used in lathe machine? Lathe machine DC shunt motor होता है. The function of brushes and commutator arrangement in a DC motor to produce unidirectional torque. The supply terminal of DC shunt motor are reversed. Supply terminal of DC shunt motor are reversed. It will run in same direction. It will run in same direction. Next, the motor best suited for hoist, crane and traction type load is DC series motor. 4-point starter is used in DC shunt motor where variation of speed is required. Next है, rheostatic braking cannot be used in which of the following? Rheostatic braking cannot be used in none of the above हो जाएगा. इसका क्या है? ब्रेकिंग इज मेनली 2 टाइप्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल. ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज प्लगिंग और रियोस्टेटिंग रिजनरेटिव. इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज यूज इन इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड डीसी मोटर. यहाँ क्या, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कैन नॉट बी यूज इन बीच ऑफ द फॉलोइंग. रियोस्टेटिक ब्रेकिंग तो तीनों में यूज होता है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, सीरीज मोटर मस्ट नेवर बी अलाउड टू रन एट नो लोड. नेक्स्ट, which among the following is not an electrical braking method for a motor? ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल नहीं है. नेक्स्ट, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज. आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज मैग्नेटाइजिंग. ये क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग. क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, armature flask when main field flask affect 90 degree causing distorted main field flask is called cross magnetizing effect. Cross magnetizing effect distort the main field flask. Next, demagnetizing effect, armature flask when directly affecting main flask current at 180 degree which reduces the magnitude of main field flask. It's called demagnetizing. सॉरी, ये मैग्नेटाइजिंग नहीं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा आपका. क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अ स्पीड कंट्रोल बाय वॉर्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन इन बोथ डायरेक्शन. नेक्स्ट है, हाउ कैन बी फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर? लो स्टार्टिंग टॉर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन अ डीसी मोटर कैन बियर मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन? फील्ड वाइंडिंग. मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन, फील्ड वाइंडिंग. कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर आर मेड ऑफ कॉपर. Current drawn by 120 volt DC motor of armature resistance 0.4 ohm and back EMF 112 volt is 20 ampere. A DC shunt motor takes 52 ampere current from a supply of 200 volt. Shunt resistance दिया है and armature resistance find back EMF. E भी बराबर V माइनस आई है, RS निकाल लेंगे. नेक्स्ट, DC motor should not be started without starter because of very low resistance of armature winding. What happens if an ordinary DC series motor is connected to an AC supply? Ordinary DC series motor is connected to AC supply. It will rotate and exert unidirectional torque. For a DC motor, which of the following characteristics is called electrical characteristics? Electrical speed torque नहीं, speed armature current या speed
इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, टॉर्क आर्मेचर इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट, retardation test on DC shunt motor is used for finding retardation test is used for finding both iron and friction loss. Retardation test, iron and friction loss. Which of the following method of a speed control is used to control a DC motor's speed? Above base speed, DC motor speeds above base speed, field flux control होता है, DC field flux control। Next, which of the following motor is rarely used differentially compound DC motor? Rarely used differentially compound. In DC motor, mechanical losses means friction and windage loss. With the increase in speed of DC motor, back EMF increases but line current falls. Torque speed characteristics of DC shunt motor is dropping straight line. If N is the speed of DC series motor and IA is armature current, then N proportional to 1 by IA स्क्वायर हो जाता है, सीरीज मोटर है ना तो IA स्क्वायर होगा। ये सिंपल दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IA लिख देंगे, ठीक है। नहीं IA ही तो होगा, वो टॉर्क में IA स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है variation in speed by Leonard control method of DC motor occurs due to variation in armature voltage. Variation in speed of Leonard control method of DC motor occurs due to variation in armature voltage. The function of a starter in DC motor is to limit a starting current to a safer value. Next है what will happen if back EMF of a DC motor suddenly vanishes? Motor will burn. A DC series motor should always be started on load. DC series motor should always be started on load. Next है if flask of a DC motor is unchanged and supply voltage is increased by 20%, it is observed that current remains same as earlier, its speed increased by 20%. Next, the current drawn by 120 volt DC motor of armature resistance 0.4 ohm and back EMF 110 volt निकाल लेंगे वही फॉर्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा DC shunt motor is operating at no load. If armature is shunted by resistance, its speed will remain same. Selection of motor for any application depends upon which factor? Selection of motor for any application depends upon mechanical, electrical and cost, all हो जाएगा। Next, an electric motor with constant output power will have torque speed characteristics in form of rectangular hyperbola. In a DC shunt motor, the connection of shunt field winding is reversed, then direction of rotation reversed. Torque of a given motor can be varied by varying, changing flux and armature current both. If connection of field winding of a DC shunt motor is changed, then motor will run in opposite direction. नेक्स्ट हो जाएगा DC motor having full load speed of 750 rpm, a speed regulation of 10% will have no load speed of 825 हो जाएगा। ये स्पीड रेगुलेशन नो लोड माइनस फुल लोड बाई फुल लोड से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है a motor starter is variable. Motor starter is variable resistance. As the motion of armature increases, back EMF increases. DC motor कन्वर्ट, DC मोटर होता है आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। नेक्स्ट है
Which of the following motor is preferred for driving compressor, variable head centrifugal pumps, rotatory presses, circular saws, and elevators? DC cumulatively compound motor. Next है speed of DC motor is proportional to EB by phi, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट हो जाएगा. ठीक है, टोटल कितना बच रहा है आपका? क्वेश्चन 250 क्वेश्चन हो गए. अभी 1-2 लेक्चर और चलेंगे. चलिए मैं इस सेशन को ये पे एंड करती हूँ. 250 क्वेश्चन हो गए हैं. थैंक यू, बाय बाय.